Assalamu alaikum. Alaikum salam, sir. Okay, so welcome to the class of microwave engineering. Today we are going to start chapter 2 of the textbook that we are using in this course. And the title of that chapter is Transmission Line Theory. So, in the introductory chapter, we found that microwave engineering deals with high frequency signals and high frequency circuits. And because of high frequency, we found that the ordinary circuit theory is not applicable, it is no longer valid, and we have to use field theory. And in field theory, we have to make use of Maxwell equations. Now, on one side, we have circuit theory, and on other side, we have field theory. And we also discussed this point that it is comparatively easy to use circuit theory because in circuit theory you use Ohm's law, you use KCL, you use KVL. Whereas in field theory, because we have to use Maxwell equations, and if you look at the mathematical form of Maxwell equations, so either you have to perform integration or you have to perform derivation, which is considered uh, difficult as compared to addition and subtraction that we use in KCL and KVL. Now we are going to talk about another theory that is known as transmission line theory. This theory will bridge the circuit theory with the field theory. So you can consider it as an intermediate theory between circuit theory and field theory. So let me again summarize the difference. So two theories that we are comparing right now is circuit theory versus field theory. So in circuit theory, we deal with low frequency. Whereas in field theory, we deal with high frequency. In circuit theory, the circuit size is small as compared to wavelength. Whereas in field theory, circuit size is comparable to wavelength. In circuit theory, we used lumped elements, whereas in field theory, we use what is known as distributed elements. And what that means is in circuit theory, there is
insignificant variation of voltage across the circuit element. Okay, so in circuit theory, voltage and currents voltages and currents do not vary significantly over the physical dimensions. Whereas in field theory, because frequency is high, wavelength is small, so there will be significant variation of voltages and currents, not only in magnitude but as well as phase over the circuit element. So in case of field theory, voltage and current vary significantly over the physical dimensions. So this is something that we have covered in chapter 1. Now, transmission line theory, as I was mentioning, it is going to bridge the gap between circuit theory and field theory, which in a simple term means that we will be dealing with a high frequency circuit. So it means field theory is applicable. But with the help of transmission line theory, what we will do, we will approximate a field theory problem to circuit theory problem. And that will make our job easier. So whenever any field theory problem is transformed to circuit theory problem, you can make use of your ordinary circuit theory, which is simple as compared to field theory. Okay, but how we can do that? So of course there has to be some requirements, some conditions that need to be met, and for that we are going to discuss a model that is known as the lumped element circuit model for a transmission line. So we will consider a transmission line, and transmission line is usually represented by this symbol. So the two parallel lines that I have drawn, they are representing some kind of a transmission line. Okay, there will be voltage at the input of this transmission line, which is going to be represented as a function of Z and T.
So we are assuming that this transmission line is being placed along z-axis. So this is the input voltage, and there will be current represented by this notation. So the length of this transmission line is represented by L, and this length, it may be comparable to wavelength or it may be many times wavelength. So length of this transmission line in terms of wavelength is very, very large. Okay, so what is going to happen, because the transmission line length is very large in terms of wavelength, so at each and every point we will have different voltages and currents, because voltages and currents will vary. So actually we have this issue. So whenever circuit size is comparable to wavelength, so what will happen, the voltage and current will vary significantly over the physical dimension. So at each and every point we will have a different voltage as well as different current. So what we can do is we can take a small piece of this transmission line. Okay, so let's assume कि इस transmission line का मैं एक small piece ले लेता हूँ. Let's assume कि यहाँ से मैं एक show कर रहा हूँ that we cut a small portion, and let's assume कि इसकी जो length है वो delta z के बराबर है. अब ये जो delta z length of transmission line है, इसको हम represent कर सकते हैं with the help of lumped element circuit model. ठीक है, तो इस स्मॉल पीस को अब मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि मैंने इसको जूम कर लिया, बिकॉज इट मे अपीयर के इट्स ओनली दिस लेंथ, लेकिन मैं इसको बड़ा शो कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जूमिंग इट आउट, अदरवाइज इसकी लेंथ अभी भी वही. ठीक है, सो अब हमने एक इसका स्मॉल पीस ले लिया है जिसको मैं डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. And now we need to find out the relationship of input voltage and current and output voltage and current at the input and output of this transmission line. तो ये जो मैंने स्मॉल पीस लिया है, इसको मैं कह देता हूँ, लेट मी गिव इट अ नेम. दिस इज infinitesimal transmission line. So of course, when I took a small piece of this transmission line, so now this small piece may not be very large in terms of wavelength. इसका मतलब है कि अब मैंने जो small piece लिया है, इसकी जो length है in terms of wavelength अब बड़ी small हो गई है. ठीक हो गया. अब इस small piece of transmission line जिसको मैं infinitesimal transmission line कह रहा हूँ, इसका हम
सर्किट मॉडल, अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक सर्किट एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे पास इस तरह का एक सर्किट बने। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो अब हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना रहा हूँ। वंस आई ड्रॉ दैट सर्किट, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये सर्किट मॉडल हमने किस बेस के ऊपर डिराइव किया। सो दिस इज द सेम ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ हमने डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट की हुई है, और ये हमारे पास इसका अब लंप एलिमेंट इक्विवेलेंट सर्किट। सो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, अगेन यू नीड टू, ये जो मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये जो आपके पास है, दिस इज सम काइंड ऑफ अ कंडक्टर। इसी तरह से ये जो मैंने शो किया हुआ है, ये भी कोई कंडक्टर मटेरियल है, कॉपर, एल्युमिनियम, एनीथिंग। और इन दोनों के जो दरमियान वाला जो रीजन, ऑफ कोर्स दरमियान में जो है वो कोई डाइलेक्ट्रिक भी। So we know that any transmission line consists of conductors which are separated or insulated. So ये दो कंडक्टर्स हैं और ये डाइलेक्ट्रिक है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया है कि ये जो दो कंडक्टर्स हैं जो कि सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक है, इसका अगर हम लम्प्ड इक्विवेलेंट मॉडल बनाएं तो वो ये बनेगा। अब इसमें ये जो इसको मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करूंगा कि अगर हम इसको, इस ट्रांसमिशन लाइन को देखें, तो ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट मॉडल होता है। ठीक है, जब सर्किट का साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ है तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट मॉडल है। इसका मतलब है कि यहाँ इस सर्किट पे जो रेजिस्टेंस होगी, जो इंडक्टेंस होगी, जो कैपेसिटेंस होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। हर जगह पे आपको रेजिस्टेंस इफेक्ट मिल रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा होगा, कैपेसिटिव इफेक्ट मिल रहा होगा। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया है, हमने इसको लम्प्ड कर दिया है एक जगह पे। तो इस ट्रांसमिशन लाइन की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मैं शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे है। इस पूरे ट्रांसमिशन लाइन की जो इंडक्टेंस है उसको मैंने लम्प्ड कर दिया है इस जगह पे। इस पूरे ट्रांसमिशन लाइन की जो कंडक्टेंस है, ये हम आर से डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा, ये कंडक्टेंस। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ पे मैंने लम्प्ड कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आर है, एल है, जी है और सी, दीज आर बेसिक lumped circuit elements that we used in circuit theory। ठीक है, हमारे केस में आर को हम यूज करेंगे किसके लिए, इसको हम कहेंगे कि ये सीरीज रेजिस्टेंस है हमारे ट्रांसमिशन लाइन की, सीरीज रेजिस्टेंस। और क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिफाइन करेंगे, पर यूनिट लेंथ फॉर बोथ कंडक्टर्स। और क्योंकि पर यूनिट लेंथ है तो उसके यूनिट्स हो जाएंगे ओम्स पर मीटर। एल जो है हम यूज करेंगे लम्प्ड इक्विवेलेंट सर्किट में किसके लिए, ये सीरीज इंडक्टेंस है, सीरीज इंडक्टेंस। और ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा, पर यूनिट लेंथ फॉर बोथ कंडक्टर्स। इंडक्टेंस इज measured in हेनरी, एंड क्यों, बिकॉज इट इज पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम कहेंगे कि हेनरी पर मीटर इंडक्टेंस। ये जो जी हमने शो किया हुआ है सर्किट में, मैं इसको बाद में शो करूंगा। जी का सिंबल हम यूज करेंगे किस पैरामीटर के लिए, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन की शंट कंडक्टेंस, शंट कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ।
कंडक्टेंस को हम मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ सीमेंस, और क्योंकि पर यूनिट लेंथ है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट्स ऑफ सीमेंस पर मीटर। सी का सिंबल हम यूज करेंगे शंट कैपेसिटेंस के लिए, और अगेन पर यूनिट लेंथ पैरामीटर्स हैं तो इसको हम पर यूनिट लेंथ करेंगे, और इट विल हैव यूनिट्स ऑफ फैरेड्स पर मीटर। सो ये जो पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए हैं इनको हम कहते हैं कि ये पर यूनिट लेंथ पैरामीटर्स, ठीक, पर यूनिट लेंथ पैरामीटर्स। तो अगर पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस होगी तो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस वक्त जो ट्रांसमिशन जो सर्किट में देख रहा हूँ उसकी जो टोटल लेंथ है वो डेल्टा जेड के बराबर है। तो इस डेल्टा जेड लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का जब इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी हमारे पास उसको हम मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि पर यूनिट लेंथ को इसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। पर यूनिट लेंथ इंडक्टेंस को इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल इंडक्टेंस आ जाएगी। पर यूनिट कंडक्टेंस को जब हम डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस डेल्टा जेड लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की टोटल कंडक्टेंस हमारे पास आ जाएगी। और सिमिलरली सी को जब हम डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डेल्टा जेड लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। सो वंस वी नो पर यूनिट लेंथ पैरामीटर्स, तो फिर ट्रांसमिशन लाइन की जो भी लेंथ हमें गिवन हो, जिस तरह इसमें मैंने डेल्टा जेड लेंथ के लिए मॉडल बनाया हुआ है तो मैंने पर यूनिट लेंथ पैरामीटर्स को डेल्टा जेड से मल्टीप्लाई कर दी। और अगर इसकी लेंथ, ऑफ कोर्स डेल्टा जेड इज द सिंपल, डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी, इट कैन बी 2 मीटर्स, इट कैन बी 3 मीटर्स, इट कैन बी 4 मीटर्स। तो अकॉर्डिंगली पर यूनिट लेंथ को आप उस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस आती जाएगी। ठीक है, अब ये जो सर्किट मॉडल हमने बना लिया है, अब ये कौन सा मॉडल है, अब ये लम्प्ड मॉडल है। तो आपने इक्विवेलेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट मॉडल अब लम्प्ड एलिमेंट मॉडल में कन्वर्ट हो गया। और जब लम्प्ड एलिमेंट मॉडल में कन्वर्ट हो गया तो फिर अब हम इसको कौन सी थ्योरी यूज कर सकते हैं, सर्किट थ्योरी पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्यों सर्किट थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा क्या हो गया, सर्किट साइज जो है कंपेयर टू वेवलेंथ कम हो गया। वो कम क्यों हो गया है कि मैंने ओवरऑल सर्किट को उसका एक स्मॉल पीस ले लिया है, जो आपको इस वक्त नजर भी आ रहा है कि मैंने सिर्फ इसका टोटल लेंथ के बजाय इसका एक स्मॉल पीस लिया है और उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। लेटर ऑन यू विल, अगर ये स्मॉल पीस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर इसका हम देखेंगे, वी विल अज्यूम कि ये इस तरह के बहुत सारे सर्किट आपस में कैस्केड में कनेक्टेड है। अगर ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम देखेंगे जिसकी लेंथ ग्रेटर देन वेव लेंथ है, वी कैन अज्यूम दैट दिस होल सर्किट, दिस होल ट्रांसमिशन line is made up of circuits like this which are connected in cascade. ठीक है, but let's apply circuit theory on this circuit and derive some useful equations. Okay, so हम इस वक्त यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं इनपुट के ऊपर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है विद दिस नोटेशन, और इस सर्किट के आउटपुट पे जो वोल्टेज है जिसको मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। In order to represent the input current and voltages to output current and voltages, we can make use of KCL and KVL. ठीक है, तो पहले इस पे हम KVL अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर और फिर KCL अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, सो
So how you are going to write down the KVL equation? So again, you can start from this point. So minus plus, let's assume कि voltage rise को मैं positive ले लेता हूँ. So we are moving in this fashion, ठीक है? So voltage rise है. फिर आपके पास resistor के across अगर आप देखें तो voltage drop होगा, because current is flowing like this. So there is plus, there is minus. So there is a voltage drop. इसको हम represent कर देंगे resistance multiplied by this. Then there is a voltage drop across the inductor, which we can represent. And finally, we have voltage drop, which is plus minus. तो इस पूरे loop पे अगर मैं KVL apply करूँ तो मेरे पास किस तरह की equation आएगी? Let me write it down. So we have VZT minus voltage drop across the resistor, which is R into delta Z multiplied with the current, and then voltage drop across the inductor, which is equal to minus L d by dt. So inductance इसके बराबर है, and then derivative of current, which is represented as partial, because current जो है function of z भी है, function of t है, तो मैंने partial notation use की है. And then finally we have the voltage drop, which is this. So what I have done is कि मैंने KVL apply किया है इस circuit. So the algebraic sum of the voltages across the whole loop must be equal to 0, or voltage rise this must be equal to voltage drops. ठीक है, तो मेरे पास ये equation आ गया. Similarly, ये एक equation हमारे पास आ गई. We will further इसको solve करेंगे हम, लेकिन पहले हम KCL भी apply कर लेते हैं. So KCL हम apply करेंगे circuit के ऊपर. So you can consider that this is the node. This is our node. Okay. So this is the current that is moving towards the node. Similarly, यहाँ पे आप देखें कि current इस direction में flow करेगी, तो this is the other current that we need to consider. And then we have current through this capacitor as well, which will be moving in this form, and then this current. So uh, assuming that this is our node, so this current is moving towards the node, and these three currents are moving away from the node. So let's consider the current to be positive when it is moving towards the node. तो इस करंट को मैं पॉजिटिव ले लूंगा और इन दो करंट्स को, इन तीनों करंट्स को मैं नेगेटिव ले लूंगा. सो KCL अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? IZT माइनस G delta Z VZ plus delta ZT. This is the current which is passing through this inductance. So ये इसकी conductance है और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है ये. So current is voltage divided by resistance, और current is voltage into conductance. So V into G जो है आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास voltage है VG. ठीक है. Similarly, current through the capacitor is I is equal to C dV by dt. So capacitance की वैल्यू इसके बराबर है और dV by dt हम ले लेंगे, और क्योंकि voltage जो है function of two variables है तो मैं partial derivative use कर रहा हूँ. And then finally the current जो output current है जिसको हमने represent किया हुआ है with this notation. So by applying KCL we will end up with this equation. Okay. This is current and these are three currents जो कि flow. Now these two equations we can transform them into the equations that will be quite useful for us. And हम क्या करेंगे इसमें
स्टेप्स मैं बता देता हूं और फिर हम इजीली इसको कवर कर लेंगे. What we need to do is divide both equation 1 and equation 2 by delta z, and then take the limit as delta z approaching to 0. So I'm going to apply this to one equation, and once you follow this you will be able to do the same operation to equation number 2. तो मैं equation 1 के लिए आपके सामने कर रहा हूँ, equation 2 के लिए फिर आप खुद कर लेंगे. ठीक है. So first thing हमने क्या करना है कि equation 1 को डेल्टा z पे डिवाइड करना है. ठीक है. So यहाँ पे मैं इसको यहाँ यहीं पे शो कर लेता हूँ कि मैंने इसको डेल्टा z पे डिवाइड किया, इस टर्म को भी डेल्टा z पे डिवाइड कर लेंगे, इसको भी डेल्टा z पे डिवाइड कर लेंगे और इसको भी डेल्टा z पे हमें डिवाइड कर लेंगे. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे डेल्टा z कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. एंड देन वी विल हैव दिस एक्सप्रेशन. देन व्हाट यू नीड टू डू इज कि ये जो इक्वेशन के दो टर्म्स हैं, ये टर्म और ये टर्म मैं एक साइड पे कर लेता हूँ. ठीक हो गया. और ये दो टर्म्स जो है ये मैं एक साइड पे रख लेता हूँ. ठीक है ना. सो लेट मी ब्रिंग दिस टर्म एंड दिस टर्म ऑन द अदर साइड. ठीक है. तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या आएगा, वी जेड प्लस डेल्टा जेड टी माइनस वी जेड टी, एंड बिकॉज बोथ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड तो मैंने डेल्टा जेड को एस एलसीएम ले लिया. और दूसरी साइड पे हमारे पास टर्म्स क्या रह जाएंगी, वी विल हैव दिस टर्म माइनस आर आई जेड टी माइनस एल पार्शियल आई ऑफ. ठीक है. सो दीज टू टर्म्स मेरे पास था. This is the first step that I have performed, that is divide equation 1 by delta z. अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है कि डेल्टा z जो है वो अप्रोचिंग टू 0. ठीक है. तो अगर आप इस इक्वेशन में अप्लाई करें कि लिमिट डेल्टा z approaching to 0. So when you apply this limit, so what is this thing? Mathematically ये क्या चीज बन जाएगी? Derivative of something. Yes, it is nothing but derivative of voltage with respect to z. ये लेफ्ट हैंड साइड को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? Left side is basically the partial derivative of voltage with respect to z. और राइट साइड पे हमारे पास इस तरह. Now this is what you will get after applying the steps that I mentioned. कौन सा पहले डिवाइड करना है इक्वेशन को डेल्टा z से, और फिर तो इक्वेशन 1 से ही आ जाएगा. इफ यू परफॉर्म द सेम स्टेप्स टू इक्वेशन नंबर 2, ये अब आपने इक्वेशन 2 को भी डेल्टा z पे डिवाइड करना है और फिर आपने इसी तरीके से इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिख लेना है और फिर ये लिमिट अप्लाई करनी है. तो आपके पास क्या आएगा? सो आई विल से सिमिलरली बाय applying the same steps on equation 2,
we will get what you will get this expression. Partial derivative of current with respect to z equal to minus g v of zt minus c partial derivative of voltage with respect to time. So you will get this equation. इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ, इसको इक्वेशन बी. ये जो इक्वेशन ए और बी हमने डिराइव की हैं, इनको हम कहते हैं टेली telegrapher equations. And what you need to identify is कि इन इक्वेशन ए और बी को अगर आप देखें, लेफ्ट साइड पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू जेड, और उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हम ले रहे हैं, ठीक है ना. और राइट साइड पे हम क्या कर रहे हैं कि हम करंट का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन ए में. While in equation B, on the left hand side, we have a derivative of current with respect to space. और right side पे हमारे पास voltage का derivative है with respect to time. So now we have an equation that is relating the current and voltages for this circuit, जो हमने lumped element circuit model develop किया है transmission line के. And as I was mentioning कि अब आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो हमने एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन थी जिसकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बहुत बड़ी थी, इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि इस किस्म की ट्रांसमिशन लाइन अगर हमारे पास हो जिसकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ बहुत बड़ी हो, लाइक दिस, जस्ट टू, मैं इसको जूम कर रहा हूँ टू गेट आइडिया. व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इस ट्रांसमिशन लाइन को हम विजुलाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह का सर्किट बिहेवियर होगा. वी विल हैव रेजिस्टर, वी विल हैव इंडक्टर एंड कंडक्टेंस एंड देन कैपेसिटर एंड देन अगेन रेजिस्टर, then again inductor, again conductance, again capacitor, again resistor, again inductor, like this and like this. This is a cascade connection होगा, cascade connection of lumped equivalent circuit. Okay? So number of such circuits will be connected in cascade. Let's discuss this point further in the next session.